Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. This is me, Hajra Naveed. So this is our finance lecture 2. My first lecture was also related to the introduction part, but that was basically basics of finance. Well, this is our first slide that relates to the introduction to finance. Finance is a fundamental aspect of our lives, both personally and in business as well. हम सब जानते हैं कि फाइनेंस हमारी डेली लाइफ में कितना यूज होता है. हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, बस हमें उस टर्म का पता नहीं होता कि डेट इज कॉल्ड फाइनेंस. मनी के साथ डील कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में, डेट इज कॉल्ड फाइनेंस. डील्स विद मनी, दिस इज फाइनेंस. ओके, सो it is a management of money and the process of acquiring, using and managing financial resources. That is called finance. Well, in this presentation we will explore the word of finance, its key principles and its significance in our daily lives. Our another slide is importance of finance. Finance is the lifeblood of any economic system. It plays a pivotal role in personal and business decision making. हम डिसाइड हमारा एक बिजनेस है और हमने उसमें डिसाइड करना है कि उसमें मेरा एक क्लॉथिंग ब्रांड है और उसके अंदर मैंने ये डिसाइड करना है कि उससे जो प्रॉफिट आएगा ना मुझे वो मैंने सेव करना है. वो मैंने ऐसे ही स्पेंड नहीं कर देना, उसको किसी भी एक्सपेंस में नहीं लगाना, उसको मैंने जस्ट एक प्रॉफिट के नाम पे सेव कर देना है. अब मैं उस प्रॉफिट को सेव कर रही हूँ और आफ्टर अ ईयर वो मेरे पास इतना प्रॉफिट हो चुका है, इतना कैपिटल हो चुका है कि उसकी मैं उस अपने ब्रांड की एक और ब्रांच ओपन कर सकूँ. तो ये मैं क्या कर रही हूँ, डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ कि जो मेरे बिजनेस से, मेरे क्लॉथिंग ब्रांड से मुझे प्रॉफिट आ रहा है उसकी मैं एक और ब्रांच ओपन करूंगी. अगर प्रॉफिट आ रहा है तो. अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली कोई भी बिजनेसमैन कोई और ब्रांच अपने क्लोथिंग ब्रांड में अपने बिजनेस के ओपन नहीं कर सकता. वो अपने ही फिर बिजनेस को उसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे इनोवेशन लाएगा अपनी प्रोडक्ट में कि उसका बिजनेस ग्रो करे. दैट इज कॉल्ड फाइनेंस. वो मनी फिर भी इन्वेस्ट कर रहा है अपने ही बिजनेस में. तो आप लोग अपनी मनी के साथ अपनी मनी को किस तरह से डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस. दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, सो नेक्स्ट इज वेदर इट्स प्लानिंग योर बजट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स. कोई भी है वो अपने स्टॉक में, बॉन्ड्स में कोई सर्टिफिकेट खरीद सकता है, कोई शेयर्स खरीद सकता है किसी कंपनी के, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. तो वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है. अनदर इज मैनेजिंग अ कंपनीज फंड, कि आप अपनी कंपनी के फंड को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं. फाइनेंस इज एट द कोर ऑफ दीज एक्टिविटीज. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म. सो गाइस, आवर नेक्स्ट स्लाइड रिलेट्स टू द सेकंड स्लाइड. जैसा कि मैंने आपको उसके अंदर कुछ एग्जांपल प्रोवाइड की थी क्लोथिंग ब्रांड की, बिजनेस की, कि उसका जो बिजनेस का फंड है वो किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में अगर वो ग्रो नहीं कर पा रहा तो. वेल, ये जो स्लाइड है वो उसी से रिलेट करती है. फाइनेंस serves as the lifeblood of an economic system for several critical reasons. We have 4 examples to understand you about finance. First is resource allocation, second entrepreneurship, third investment, and fourth is capital formation. Resource allocation. Finance enables the efficient allocation of resources within an economy. It directs funds to where they are needed most, whether it's for starting a business, investing in infrastructure or supporting innovation. That is called the resource allocation. Second is entrepreneurship. I hope you know about the word is entrepreneurship. Entrepreneurship basically कि आपका एक बिजनेस जो है वो ऑलरेडी कि चल रहा है वो बिजनेस आपका, और आपने उसी बिजनेस के अंदर एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है. दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप. आप अपने बिजनेस के अंदर कोई इनोवेशन ला रहे हो, इनोवेशन मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप. या आप अपना एक नया बिजनेस ओपन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. और स्मॉल बिजनेस हो सकता है, वो मे बी आपको बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. सो लेट्स सी किसके अंदर क्या है. फाइनेंस प्रोवाइड्स द नेसेसरी फंडिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स. बेसिकली होता ही है ऐसे ही है, टू स्टार्ट एंड एक्सपैंड बिजनेसेस. या तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो उसके अंदर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, या आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, रन अप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, दीज बिजनेसेस आर ऑफन द ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन, कंपटीशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप. Investment. Individuals and institutions use financial markets to invest in assets such as stocks, bonds and real estate. इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर में स्टॉक्स, बॉन्ड्स का सारा उसका डिटेल में बताया था. डेफिनेटली वी विल लिसन दैट, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी.
Well, these investments contribute to the growth of companies. जितने इन्वेस्टमेंट्स है ना वो कंपनीज की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की, और ये डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है इससे. और नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन. फाइनेंस फैसिलिटी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल विच इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बात हो रही है, ठीक है, कि किस तरह से फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है. कैपिटल बिजनेसेस क्रिएट लाइक कैपिटल इज यूज्ड टू बिल्ड एंड एक्सपैंड बिजनेसेस, okay, create jobs and develop new technologies. So these are all the terms to understand. Our last slide is presentation overview. Well, to guide you through the world of finance, we will cover these topics, which includes finance basics that I covered already, along with personal finance and corporate finance. I covered both of these as well in the first lecture. Next is financial statements, investments, financial markets, risk management, regulations and compliance, emerging trends in finance. So these are all the topics that we will cover in the short course of finance. So stay tuned with me, and I hope you will like this video. So don't forget to subscribe my channel as well. Thank you.